Hello students, myself Sonika Yadav from HCI and it is my lecture number 4 of the 10th biology chapter number 2, that is control and coordination in the plant. So my topic is phytohormones. So first of all, phytohormones are diffusible chemical substance other than the nutrient and they regulate growth, development. The phytohormones, they are synthesized away from the region of action. This is the important point. That means जहां पर फाइटोहॉर्मोन्स को वर्क करना है वो वहां पर सिंथेसाइज नहीं होते हैं. दे सिंथेसाइज अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ एक्शन. सो आवर फर्स्ट दैट फाइटोहॉर्मोन दैट इज साइटोकाइनिन. सो साइटोकाइनिन, it is well known cell division hormone because it promote cell division. Cytokinins are synthetic as well as the natural. So kinetin is a synthetic cytokinin and the gelatin is the natural cytokinin. In the coconut milk and the apple fruit extract, that is containing rich amount of the cytokinin. Cytokinin, it is synthesized at root tips, like root tips. So at this site, root tip. So they synthesized at a root tip from where they reaches shoot. That means from root tip it entered into the stem and it work on the shoot system. Other areas of cytokinin synthesis are endosperm. Endosperm, we all know, most of the plant that provide nourishment to the developing seeds, and it help in the development of seed because the endosperm rich in the cytokinin and it provide nourishment to the developing seed where the cell divide to form new cells. So the first major function of the cytokinin is cell division, because it is very essential for the cell division. Next one is the differentiation. Differentiation, that means a cell obtained specific structure and function, that is known as differentiation. So differentiation, they are required for the differentiation of cell and tissue. Prevention of the senescence. Senescence होता है बेटा, that is the aging, बुढ़ापा. ये रोकता है. So they delay aging of the plant organ including cut flowers, vegetables and the fruit. बुढ़ापा दूर भगाता है, मतलब ये है. Phloem transport. It also help in the transportation of the food material through the phloem. Resistance. Cytokinin increase resistance to the disease and temperature. Like we all know, plant faces extreme high temperature, so that time plant protected by the cytokinin. Apical dominance को कम करता है. Auxin, we all know, it promote the growth of the apex. सिर्फ एपेक्स की ग्रोथ हो रही थी, लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ को रोक रहा था. बट व्हेन वी अप्लाई साइटोकाइनिन, इट वर्क अगेंस्ट ऑक्सिन. इट मीन्स इट सप्रेस द ग्रोथ ऑफ एपेक्स एंड promote the growth of lateral branches. These are the lateral branches. So apical dominance, that is overcome by the cytokinin,
and allow sprouting of the lateral buds. That means on the lateral side bud formation. On the lateral side bud formation takes place. Next one is the ethylene. Ethylene, a gaseous hormone. That is the very important point. Gaseous hormone. It promote growth but inhibit longitudinal. Here the two things, transfer growth and the longitudinal growth. That means it promote height of the plant but inhibit the increase in diameter that stop. So it promote height but it stop the diameter increase. Ethylene maximally synthesized during the ripening of fruits. So climacteric fruits are those which produce a fragrance during their ripening. Apple, banana. So first one, it help in the growth. It promote growth. Next, senescence and abscission. It promote. सेनिसेंस का मतलब एजिंग. आपको पता है लीफ फॉल हो रही है, फ्रूट फॉल. सो फ्रूट फॉल दैट मीन्स फ्रूट गिर रहा है. गिरेगा कब? जब उनके बीच में जो ब्रांच है और जहां पर फ्रूट अटैच है. सो यहाँ एक लेयर बनेगी और उस लेयर को कहा जाएगा दैट इज द एब्सिशन लेयर. दैट इज एब्सिशन layer. Abscission layer, that layer formed between the branch and the fruit. So जब ये abscission layer form होगी so fruit नीचे गिर जाएगा. So ये बुढ़ापा लेकर आता है और abscission को प्रमोट करता है leaves में and flowers में. Dormancy. Dormancy होता है inactivity और inactive phase. So dormancy को break करता है and production कराता है various parts का like the rhizome, bulbs and the combs. फ्रूट राइपनिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द फ्रूट राइपनिंग हार्मोन. दैट इज द एथाइलिन. नेक्स्ट वन इज द एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड वी ऑल नो इट इज ऑल्सो नोन एज ABA एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट नेम दैट इज द स्ट्रेस हार्मोन. स्ट्रेस हार्मोन का मतलब है ये वो हार्मोन जो स्ट्रेस कंडीशन में प्रोड्यूस हो रहा है इनसाइड द प्लांट. Stress condition का मतलब plant faces the condition which are not favorable for the plant growth, like less amount of the water and plant facing the stress for the water. So that is the stress condition. High temperature, again a stress condition. So the abscisic acid also known as stress hormone because this abscisic acid produced during the stress condition to overcome the stress condition. So it inhibit the growth of plant at stress condition. Stress condition, that means when conditions are not favorable for the plant growth, that time it inhibit the growth of the plant, and that time the main motto of the abscisic acid is to protect the plant from that stress condition. So it induces dormancy for overcoming stress condition. First one, controlling growth is the major function. Abscisic acid keep growth under check by counteracting the excessive activity of growth promoting hormones. First one, कि जो बहुत ज्यादा ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन की एक्टिविटी बढ़ रही है तो उनको कंट्रोल करेगा. ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर. अब हमने कहा प्लांट फेस द स्ट्रेस कंडीशन, सो दैट स्ट्रेस दैट मीन्स लेस वाटर इन प्लांट. सो किसको रोकेगा एब्सिसिक एसिड? ट्रांसपीरेशन. क्या होता है ट्रांसपीरेशन? दैट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द form of water vapors. So during the stress condition,
plant show transpiration, but abscisic acid that prevent transpiration, or we can say loss of water, because the amount of water more needed inside the plant for the growth. Next one is the dormancy. It induces dormancy of the bud and seed. जब प्लांट और सीड बड फेस कर रहा है स्ट्रेस कंडीशन, अमाउंट ऑफ पानी वाटर कम है, सो दैट टाइम डोरमेंसी इनएक्टिविटी आ जाएगी और प्लांट का जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं करेगा. नेक्स्ट वन, विल्टिंग, सेनेसेंस एंड एब्सिशन प्रमोट करता है, बिकॉज एब्सिशन प्लांट में बहुत सारी लीव्स हैं बट अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट के पास कम है. सो अगर लीव्स रहेंगी, सो बहुत सारे नंबर ऑफ स्टोमेटा है, दे ओपन एंड दे स्टार्ट लूजिंग देयर वाटर. सो कराएगा क्या एब्सिसिक एसिड? लीफ फॉल, गिरा देगा. जब ये पत्तियां गिर जाएगी तो स्टोमेटा का नंबर अपने आप ही कम हो गया है. अगर स्टोमेटा का नंबर कम हो गया है, दैट मीन्स ट्रांसपिरेशन रेट रिड्यूस हो गया है एंड इनसाइड द प्लांट वाटर का अमाउंट स्टोर हो गया है, प्रेजेंट है. सो इट प्रमोट सेनेसेंस, एजिंग बुढ़ापा लेकर आएगा. एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन कराएगा. एब्सिसिक एसिड कोज एब्सिशन ऑफ द फ्लावर एंड द फ्रूट. पके हैं या नहीं पके दैट डजेंट मैटर, और फ्रूट को नीचे गिरा देगा. फ्लावरिंग, एब्सिसिक एसिड जो प्रमोट कर रहा है क्या? फ्लावरिंग इन द शॉर्ट डे प्लांट्स. Next one, that is the difference between the plant hormones and the animal hormones. So first one, that is the plant hormone. अब plant hormone की हमने बात की, they synthesized, but they not synthesized at a specific gland. But animal hormone, they synthesized or produced inside specific glands like the endocrine glands. Plant hormone, they are few in number. We count auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene and abscisic acid. These are the plant hormone. But the animal hormone, their number will be several. Plant hormone, they are synergic action. That means their action is not highly specific. They are more common, like auxin and gibberellin. They behave like the same. Unlike cytokinin, that also help in the differentiation. Auxin also help in differentiation. Gibberellin also. That means their actions will be more common. And animal hormone, they are highly specific. Plant hormone mainly regulate growth and development, but the animal hormone, they regulate various type of the functioning that show growth and development. Next one is the coordination in the plant. That means, what is coordination? Coordination in the plant. First one, plant do not have nerves, do not have muscles, but they respond to a stimulus, like sunflower that rotate according to the sunlight. So that is a type of response. So first, plant show coordinated movement, but that movement is very slow. So first one, what is a stimulus? So stimulus होता क्या है बच्चों? Stimulus is the change in the environment, the agent, factor or change in the environment which cause movement or any other type of reaction, that is called stimulus. जिस रीजन पर स्टिमुलस का डिटेक्शन हुआ है प्लांट में, दैट इज नोन एज परसेप्टिव रीजन. और
जो रिएक्शन प्लांट ने प्रोड्यूस की किसी स्टिमुलस के लिए, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स। सो यहां पर हमने बात की स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? चेंज इन द एनवायरमेंट, एनी काइंड ऑफ चेंज विच कोज मूवमेंट, वो स्टिमुलस कहलाएगा। जिस रीजन पर स्टिमुलस डिटेक्ट हुआ प्लांट में, दैट इज परसेप्टिव रीजन। और जो रिएक्शन है किसके लिए? स्टिमुलस के लिए, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स। अब जो प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स शो करता है, दैट रीजन इज नोन एज रिस्पॉन्सिव रीजन। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।